Hi, guys, and welcome back to Humanities. In today's lesson, we'll be learning the art of making notes. Now, Humanities is a subject which contains a lot of theoretical part. It is all about reading theories, right? So, you have to master the art of making notes, which will help you further in framing your answers, right? So, in today's video, we'll be learning how to do it. So first I'll just break this section into several parts. So first we'll start with the basic essentials that we need to keep in mind while making our notes. So number one, the meaning of notes itself means a short part, a precise part of a bigger part, right? So you don't have to do कि 500 pages की book है तो 300 या 400 pages के notes हैं. No, that does not make any sense. That the second point is that your notes should be clear plus understandable. It should be clear in your mind. It does not matter कि दूसरे बंदे को समझ आ रहा है या नहीं. You are the one जिसका तुम्हें ध्यान रखना है. Make notes for yourself. They should be clear and understandable. Point number 3, they should be well written. I know ये बहुत एब्सर्ड और बेसिक चीज़ है, बट या दे शुड बी वेल रिटन. एटलीस्ट तुम्हें खुद को तो अपनी हैंड राइटिंग समझ आए, या पता चले ऐसा हुआ नोट्स खोले समझ ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या हुआ है. ओके देखने में सुंदर होने चाहिए ताकि तुम्हारा मन और करे पढ़ने का. ओके एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्लीज़ कीप इन माइंड गाइज कि ये नोट्स तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगे. दिस इज़ ऑल फॉर फ्यूचर प्रेपरेशंस. बिकॉज पता है कि अभी तुम बना लोगे, यू विल थिंक जस्ट 11th या 12th के लिए, बट नो गाइस फ्यूचर में काम आएंगे. देखो तुम ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हो, राइट? तो तुम्हारी आगे वाली फील्ड भी प्रॉबेबली इसी फील्ड में होगी. सपोज लॉ, पॉल साइंस ऑनर्स, यूपीएससी, इस सब में ये सब कुछ काम आने वाला है. तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये फ्यूचर के लिए भी रेलिवेंट है. तो प्लीज़ प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली ताकि तुम्हें बाद में डबल मेहनत ना करनी पड़े. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि वेल अंडरलाइंड होने चाहिए. मतलब एंड बाय अंडरलाइनिंग आई मीन आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर राइटिंग योर आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. प्लीज़ अंडरलाइन करने की आदत डाल लो. ठीक है. नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ कि एब्रीविएशंस, ये तो सबने सीखा ही है. इंग्लिश में नोट मेकिंग तो है ना सिलेबस में, तो वही कि नोट्स तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनमें शॉर्ट फॉर्म्स घुसाओ. ठीक है, जस्ट सो दैट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएं. टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के याद करो यार, ऐसे नहीं होगा कुछ याद. यू हैव टू मेक सर्टन ट्रिक्स. मैं तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे ट्रिक्स बनाई, मैप्स के क्वेश्चन में कैसे याद किया सब कुछ. ओके तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स. ठीक है. नाउ वी आर गोना लर्न द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नोट्स. स्टेप बाय स्टेप क्या करना है टू फॉर्म प्रॉपर नोट्स जो रेलेवेंट होंगे और जो तुम्हारे काम आएंगे एग्जाम्स में. सो लेट्स स्टार्ट नंबर 4 ऑफ बुक 1 विच इज़ द लास्ट चैप्टर. एंड इसमें आई विल बी स्टडिंग की बुद्धिस्ट फिलोसफी, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. ठीक है, which is on page number 91. So now step 1 is reading the book, reading the part जिसके तुम्हें notes बनाने हैं, है ना. So I'll read it. ठीक है. While reading it, step number 2 is to underline the key words. Guys, boards में teachers key words ही देखते हैं because no one has the time to read your whole answer. Okay, so you have to underline the keywords in your book itself. Then after reading the paragraph once जो तुम्हें पढ़ना था, after reading that you will read it again. and उसके साइड में ही बुक में जो खाली स्पेस है ना, राइट हैंड साइड पे जो खाली कॉलम है उसमें you will make your short notes so that कि तुम साथ साथ पढ़ रहे हो तो तुम उसे नोट्स के फॉर्म में ही पढ़ रहे हो, पॉइंटर्स के फॉर्म में कर रहे हो याद. देखो आई हैव मेड दीज नोट्स साइड में ही कि जैसे जो मैंने पढ़ा मैंने उसका एकदम शॉर्ट और प्रिसाइज नोट बना दिया साइड में, सो दैट माई ब्रेन कैन रिमेंबर इट कि फर्स्ट लाइन में ये लिखना है. बाकी तो लिख लोगे, बस कीवर्ड्स के नोट्स बना दो कि था क्या इस पैराग्राफ में. ठीक है. सो दिस इज़ द स्टेप 2 टू मेक योर नोट्स इन द बुक इट सेल्फ गाइज, क्योंकि यू आर गोना रीड योर बुक
for like 100 times before your boards. ओके, तो बुक में ही नोट्स बना लो साइड में, ठीक है. तो ये तुम्हारा ऐसे ना पूरा पैराग्राफ और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सो वेन एवर यू विल रीड योर बुक, यू विल रीड योर नोट्स विच आर बिसाइड द पैराग्राफ इटसेल्फ, है ना. Now the next and the most important step is to make actual notes, because by notes we don't mean book के notes, right? These were because of speedy reading. But अब register में कैसे बनाएं? तो we'll make those notes in our register in the form of an answer, but we'll not expand it. हम keywords ही रखेंगे. So the last and the final step is to highlight. We are going to highlight the keywords in both of our notes, number 1 in the book and then in the register. Currently I am highlighting the main points in the book alongside with the notes that I've made beside the paragraph, and now I am highlighting the notes that I've made in the register. I am just highlighting the keywords and they are all similar in all of these notes. Now let's compare and analyze how much we worked towards it without getting exhausted and without wasting too much time. So we revised this whole paragraph for about like 3 times, and we made notes 3 times. We underlined twice and we highlighted once. So this is how revision takes place. So guys, I'm gonna show you how to find out the keywords with another example, which is from chapter number 3 of Political Science, book 1. We are on page number 47, and we are gonna study the ways how can the hegemony of the US be overcome. So I have highlighted the main points, that is the keywords. Now what are the keywords? The keywords are the important points जिनके बिना तुम्हारा answer is irrelevant and incomplete. So इस answer में number 1 is the bandwagon strategy, then is the ability to hide, and then comes the non-state actors. Now I'm going to show you how am I gonna make notes in my register from these basic keywords, and then how will I be able to form an answer out of this. So here is the question: how can we overcome the US hegemony? Point number 1, since there is no world government, so we don't have any direct way. So because of this we need to follow the indirect methods. So guys, this is how you interconnect things, ठीक है. ये बुक में कहीं नहीं लिखा, बट ये दिस इज़ द वे टू फॉर्म योर आंसर्स, ठीक है. सो वी नीड टू फॉलो द इनडायरेक्ट मेथड्स. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, सिंस देर इज़ नो सिंगल पावर एनीवेयर विच कैन बैलेंस द US, we don't have another direct method, and then we come to the indirect strategies that the book talks about. Strategy number 1 is the bandwagon strategy. Then strategy number 2 is to hide, and then strategy number 3 is the non-state actors. I've divided this in the form of a flowchart. This is how you can memorize things and make the concept easy. So we'll just describe all of these 3 points. Point number 1, which means to play friendly, extract benefits. Point number 2, to be the underdog, to not to come into the eyes of the US. And then point number 3, that who are the non-state actors. Then comes the last point, which is very important. Many of the students miss this point, which is the global village. ये एकदम चैप्टर के एंड में लास्ट पैराग्राफ है. ग्लोबल विलेज की तरह ही the resistance is the only option. So guys, this is an overview of how you can make notes on your own, and this is how it looks. और इसी को expand करके तुम एग्जाम में आंसर लिखोगे. So that is it for today's video. I hope you found it helpful. If you found it helpful, please like, share and subscribe to the channel. It just takes 1 single second, guys. And one more thing, I'll be really
appreciating if you would suggest any of the topics that you are finding difficult to cope up with. I'll definitely make a video on them for sure. So do tell me that in the comment section below. Happy learning.